Hello everyone, welcome to the session. And this is the, I think, third or second session of quadratic equation, if I'm not wrong. And we have so far covered a linear equation, special equation, and we have moved ahead with a quadratic equation. So we are covering all the topics of algebra. तो अभी तक तीन हो चुके हैं, if I'm not wrong. One is the linear one, and then special equation, then quadratic also. So we did all these. Like quadratic, we are ongoing. It is ongoing. तो ये लंबा है एंड इट इज इम्पोर्टेंट वन, तो हम कवर करेंगे इसे अच्छे से। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमने जो लास्ट सेशन किया था उसका कुछ अगर क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस आए तो। एंड अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन चैट बॉक्स, नहीं है तो नो वरीज। या, दिस इज अनाउंसमेंट गाइज, लाइक इट इज आवर ऑफिशियल मॉक। So if you are looking to take a mock this Sunday, I would recommend you all to attempt this mock. This is a free for all. It is an open mock, so anyone can attempt it. You can simply visit and use this link. Okay, you can simply type this link on your browser or Chrome, whatever you are using. Or if you have the link, you can simply click on the link and enroll into it, or take a mock anytime in a day. हमने कोई restriction नहीं लगा है. Yes, the 8 a.m. the mock will be start. And whatever these are some scholarship, those who have scored more than 95 percentile, they will get a CAT mentorship program. Apart from those who score 90 to 95 percentile, they will get 25% scholarship. They can enroll into our courses, any courses. Then similarly, these are some scholarship, you can look into it. And I would recommend you, highly recommend you to attempt. फ्री में मिल रहा है तो भाई सब अटेम्प्ट करो, मैं तो कहता ही हूँ। जहाँ जहाँ फ्री में मॉक्स मिलता है चुपचाप अटेम्प्ट कर लो। एंड check the quality. If you like the quality, then enroll into it. Okay. So these are the things you can look for it. You can attempt this mock. And possibility was there कि मैं इसके LRDI sets मैं खुद मतलब मैं आपको यू कैन से एनालाइज करके दूँ। मैं पूरा सॉल्व करूँ आपके साथ बैठ के, तो देर इज पॉसिबिलिटी, हाई चांसेस अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा अगर मैं सेम डे पे, तो आई विल डेफिनेटली गिव यू ऑल दी यू कैन से सॉल्यूशन इन माय वे। बाकी वहाँ पे तो गिवन है ही, जो मेंटर है उन लोग ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड किया ही है सॉल्यूशन। बट मैं अपने तरीके से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंड हाउ टू अप्रोच दिस सेक्शन इन दिस मॉक। ओके, तो ये हम करेंगे डिस्कस। एंड इफ आई डू द लाइक दिस डिस्कशन आई विल डू इन ऑन ट्यूसडे। तो यू हैव अ टाइम टिल ट्यूसडे, ट्यूसडे के पहले जो भी हो सकता है अटेम्प्ट कर लेना है मॉक। ओके, सो यू हैव ट्यूसडे तक आप कर लो भाई। इसके पहले आप कभी भी मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स गो अहेड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बहुत सारी चीज कर चुके हैं टिल नाउ। एज यू ऑल नो व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0, right? This is a general form, and we have looked into it. हमने बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स देखे थे, बट दोज हु हैव वॉच्ड द लास्ट रिकॉर्डिंग वेल एंड गुड। अगर आपने पूरा एंड तक देखा है तो आपको पता होगा मैं क्या अभी बताने वाला हूँ। बट आपने अगर नहीं देखा है तो फॉर देम we missed to jot down this point initially or in the starting of the session, that is sum of the roots and product of the roots. Okay, these are the something I missed to add at the start of the session, but मैं अभी फिर से करवा दे रहा हूँ। So sum of the roots, what is sum of the roots? Roots, first roots होते क्या हैं? So roots is nothing but value of x, value of x. So इसे हम रूट्स कहते हैं। जो भी x की वैल्यू होती है हम उसे रूट्स कहते हैं। सो इन दिस केस देयर द हाईएस्ट पावर इज 2, इट मींस वी विल गेट टू वैल्यू ऑफ x। सो हम दो वैल्यूज को हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो सम ऑफ द रूट्स अगर मैं कह रहा हूँ इट मींस व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। एंड इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से बी उठा लो और यहाँ से ए, माइनस बी अपॉन ए। सिमिलर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट नथिंग बट अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू जो है हम डायरेक्टली अगर हमें इक्वेशन से फाइंड आउट करना है तो वी विल फाइंड आउट इट सिंपली सी बाय ए।
Okay, hope it is clear. This is the sum of the roots and this is the product of the roots. Now there is one question we will see in the sessions or upcoming sessions. Maybe session में अगर मैं question लाया होगा तो हम देखेंगे. The question was like, if they have given you a sum of the roots and product of the roots, the value of sum of the roots and product of the roots, and ask you to find out the equation. Okay, if they have given you a sum of the roots and product of the roots and ask you to find out the equation, how could you find this equation? So the simplest formula for this is nothing but x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. This is the direct formula to find out the equation. If they have give you the product of the roots and sum of the roots, you can simply find out the equation using this formula. You don't need to do anything and long approach. There are long approach too. If you know the long approach, well and good. If you don't know, it's okay. आप simple a formula use करो. Even in CAD, we don't have lots of time to do the or solve everything each and everything step by step. So you can remember this formula. This is an important one, and it will going to helpful to you in not only CAD but also in omits. So these are the important thing. Basic था इसलिए मैंने करवा दिया. अब आगे बढ़ते हैं. आज के सेशन में क्या है उससे देखते हैं. So this was our first question, and the question was asking you, find the least positive integral value. Least positive integral value of m if the root of the equation is given to you is nothing but 2x square minus mx plus 7 is equal to 0. So do you want to try this? I would recommend try once. So like you can see, some of you have found 7, some of people have got 8, and 2 root 14 is not, I would won't say it is the answer, simply because they asked you integral. Integral मतलब होता क्या है? देखो, एक चीज होता है कि issue, when I was preparing, I was in a dilemma, what is the integral and how it is different from integer. ये कुछ नहीं है, इसका मतलब भी वही है. It is simple as integer. So assume it integer, and when I ask you for integer, it means we are asking simple number like 1 2 3 4 or minus 1 2 3. Okay, these are numbers, these are the integers. Like, so if you haven't watched our first session, go through it. I explained this very well. सब कुछ समझाया मैंने, इंटीजर क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है. लीनियर में आई थॉट मैंने समझा चुका हूँ. Okay, so let's see what is the answer. So as you know, we have already seen this kind of question in linear equation, and that was easy to find a least positive and highest one जो भी पूछा जाता है. Okay, so when you can solve here, let's come to here in this question. What they are asking, find the least positive integral value of m if the root of equation, so equation is 2x square minus mx plus 7 is equal to 0, are real and unequal. Real and unequal. What is the condition for real and unequal? What is the condition for this real and unequal? Condition क्या है? Condition is nothing but d is greater than 0, right? It is the condition because it is real and unequal. अगर ये equal होता तो क्या करता मैं? D is equal to 0. And it is mentioned only, like let's say ये तो बोला है real and unequal, तो मैंने ये लिखा. अगर real and equal मुझे कहता, I would simply say d is equal to 0. What if they say only real? What if they say only real? तो रियल में इस केस में क्या करूंगा? आई विल टुक d इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल तो यहाँ भी है, रियल यहाँ भी है. और सिर्फ अगर रियल पूछा उसने तो आई विल टेक बोथ कंडीशन एट वंस, दैट इज d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. होप इट इज क्लियर. बट हमें अभी क्या पूछा है? अभी हमें सिर्फ उसने बोला है दैट इज द इक्वेशन इज रियल, लाइक द रूट्स आर रियल. Roots are real means d is greater than 0. If d is greater than 0, what is d? D is nothing but b square minus 4ac
which is greater than equal to, sorry, greater than 0. Here if you see b क्या है? B is nothing but minus m. If you compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0, you will get a is equal to 2, b is equal to minus m, c is equal to 7. So simply b is nothing but minus m का whole square minus 4 time of ac. A is 2, c is 7, which is greater than 0. Now from here you will get m square minus 4 2s are 8 and 7 8s are 56, which is greater than 0. From here you can simply say m square is greater than 56, right? M square is greater than 56. Now Gothman is saying 8. Nikesh also saying 8. Great. अभी तक 7 आ रहा था, अब 8 आ रहा. चलो, तो यार यहाँ से देख लो, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना. दो तरीके से समझा दूंगा, भले ही मैं, कंफ्यूज मत हो. वन अप्रोच इज सिंपल. इफ यू नो दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इफ यू नो दिस आइडेंटिटी और यू कैन से फॉर्मूला, जो भी बोलो, ये अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड. नेक्स्ट थिंग, सिंपल ऐसे कर लो. अब यहाँ पे क्या है ना, इट इज मेंशन एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 56. एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 56. तो ग्रेटर देन 56 है, तो ग्रेटर देन 56 क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है यार. ग्रेटर देन 56 तो बहुत से नंबर है. 57 हो सकता है, 58 हो सकता है, 59 हो सकता है. बट एम स्क्वायर की अगर वैल्यू मुझे सबसे बड़ी चाहिए, यानी स्क्वायर भी रहना चाहिए, इट मस्ट बी अ स्क्वायर. So what do we say? This is a square of what? This is must be. Okay, give me a moment. Okay, so you can see here 56. This should be must be greater than 49, and 49 is nothing but 7 ka square, right? So this value must be greater than 7 ka square, and it is nearest to. You can simply say 64, which is the 8 square. तो बड़ा जो नंबर है कौन सा है? If I say simply m square is greater than 7 square, it means m is must be is equal to 8. एंड देखो सेटिस्फाई भी कर रहा है बिकॉज 64 है, विच इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 56. 56 के से देखो बहुत बड़ा है यार. मैं बोल सकता हूँ ना कि m की वैल्यू 8 हो सकती है. देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी द वैल्यू ऑफ m शुड बी -8 ऑल्सो. आपको पता होना चाहिए, जब हम स्क्वायर से अगर स्क्वायर रूट में करते हैं तो हमारे दो वैल्यूज आते हैं. और यू कैन सिंपली से 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, एंड -8 का स्क्वायर भी क्या होता है? 64 होता है. तो देर आर टू वैल्यूज, 8 एंड -8. तो दिस m शुड बी ग्रेटर देन एनी ऑफ दिस वैल्यू, राइट? तो m किससे, मतलब लीस्ट वैल्यू पूछा मुझे, छोटा वैल्यू. तो m भाई 8 भी हो सकता है, m 9 भी हो सकता है, m 10 भी हो सकता है. एनी वैल्यू इज पॉसिबल, बट द लीस्ट वैल्यू शुड बी व्हाट? 8. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8. इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8, बिकॉज दे आर आस्किंग मी लीस्ट वैल्यू, राइट गाइस? होप इट इज क्लियर. If it is clear to all of you, do let me know, then we go ahead. Okay, if it is clear, let's go ahead. लीस्ट पूछा है इसलिए मैंने ये किया. यहाँ पे आपको डोंट आस्क मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और तो वहाँ कुछ भी हो सकता है. यू कैन सिंपली से इनफाइनाइट. हाईएस्ट नहीं पूछ सकते, बिकॉज यू शुड नो अ रेंज, देन यू कैन ओनली फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू. सो या, इफ यू able to understand this question, can you guys solve this one? If you understood the last question very well, you guys able to solve this one? Let's have a try. Now see here, it is mentioned clearly. The equation is like the roots of the equations are complex. Complex means what? D must be less than 0. तो अब इतना मैंने बता दिया. चलो देखते हैं आप कितने लोग बना पाते हैं. Have a try. So in this question, as it is mentioned, you have to find greatest integral value and the least integral value. एक सबसे बड़ा चाहिए, एक सबसे छोटा चाहिए. And
it is given that the roots of the equation are complex. तो इसके roots जो है वो complex है. Okay. तो roots complex है, it means d is less than 0 and d is nothing but b square minus 4ac, which is less than 0. If I say b square minus 4ac is less than 0, it means what? b क्या है यहाँ पे? b is minus m का whole square minus 4 time of ac, 3 into 8, which is less than 0. If we solve ahead, you will get m square minus 3 4s are 12 and 12 adds up. How much it is? The 12 adds up, yeah, 96. Yeah, 12 adds up 96. So it is 96, which is less than equal to 0. Now from here, m square is less than 96, right? If m square is less than 96, अभी मैंने बताया था अगर ये लेस देन है 96, आप देख सकते हो ये 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है. This 96 is lying between 9 square and 10 square, if I'm not wrong. It is nearby here because 9 square is 81 and 10 square is 100. You can see 96 is lying between these two values. So because it is mentioned less than, like m square should be less than 96, it means I would simply say if it is less than 96, there is possibility integral value is only for 9 square. So I would simply say it is either a 9 square or either minus 9 square. Anything is possible. So I got two values for m. M is 9 or m is minus 9 or anything between these two values. You can simply say. So m is anything between these two values. अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा दूं मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, m is less than equal to 9 or greater than equal to minus 9. Anything possible in this range, right? So because the first question is asking you a greatest value क्या possible है? सबसे बड़ा तो 9 ही है. तो यह इसका आंसर आ जाएगा +9. So for the first question, the answer is +9. Second one, the least value. Least is possible -9. So the answer is -9. Hope it is clear. -10 क्यों नहीं बोल सकते हो? Obvious सी बात है यार, इसको सरपास कर जाएगा. 96 सरपास नहीं होना चाहिए. That's why the only two values is possible, 9 and -9. So answer is, the first answer is 9, the second is -9. Hope it is clear. And ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आपको अपकमिंग डेज में जो हम मॉडुलस और इनइक्वालिटी पढ़ने वाले उसमें भी यू कैन सी दैट वाज आल्सो इजी फॉर यू. एंड दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, यू कैन ट्राई. यहाँ रियल रूट्स आपको बताया गया है. ओके, द रूट्स आर रियल ऑफ दिस इक्वेशन. द रूट्स आर रियल. पी की वैल्यू आपको निकालनी है. ऑल्सो इट इज गिवन दैट दिस इज द रेंज. ओके, हैव अ ट्राई. चलो अभी ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, अभी टाइम है. हैव अ ट्राई. निकेश, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 4. अवनीत 13. 4 कहाँ पे? ऑप्शन में भी 4 नहीं है. ऑप्शन 4 कह रहे हो क्या, या फिर इन टोटल 4? नो, इन टोटल 4. इन टोटल 4 ही आ रहा है. लेट्स सी कैसे करना है. चलो इन टोटल 4 तो नहीं आना चाहिए यार. 4 कम आ रहा है. चलो देखते हैं. सो बिकॉज इट इज गिवन टू यू दिस इक्वेशन हैज अ रियल रूट्स, आई एम गोइंग टू अज्यूम इट रियल रूट्स. नाउ सी हियर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इफ दे टोल्ड यू दैट द इक्वेशन और द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल और सिंपली दे हैव रियल रूट्स, इट मीन्स दो कंडीशन है. एक तो d इज ग्रेटर देन 0, सेकंड वन इज d इज इक्वल टू 0, राइट? These are the two conditions. One is d is greater than 0 and d is equal to 0. So I would simply like to combine those two in single one. I would simply say d is greater than equal to 0. Hope you don't mind if I combine both in single one, because काम तो वही करना है. Now simply, what is d? D is nothing but b square minus 4ac, which is greater than equal to 0. Now here, b is what? B is 6, 6 का square, minus 4 time of a is nothing but 1, and c is p, is greater than equal to 0. If I solve it ahead, I will get a 36 minus
4p which is greater than equal to 0. I simply solve it more, and I would took this 4p here. I will get 36 is greater than equal to 4p. 4p से कैंसिल कर लो यार, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 4 1 4 9 36. See here what you got. You got p is must be less than equal to 9. p must be, इसको पढ़ोगे कैसे? अगर इसको थोड़ा अलग अरेंज कर लो, चलो ऐसे कर लो, इसका कहने का मतलब यही है ना कि p जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 है. p either equal to 9 or going to be less than 9, right? Now they asked you how many equations of the form पर p is an integer. कितने इक्वेशन होंगे जिसमें p इंटीजर होगा? तो देखो p के बहुत सारे वैल्यूज आ रहे हैं, यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यू ऑफ p. तो सिंपली you don't count the equation, you don't have to make all the equation and then count, you simply count the value of p. The value of p changes, the equation will get changed. So you simply have to count the number of p, how many number of p's are possible. So you can simply see here the range for p is less than 9, which we got from this equation. Also they have given us the p is lying, p is nothing but less than 13 and greater than equal to -4. It is what they given to us. If I simply see in a number line, तो मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर -4 है, यहाँ पे 13 है, तो मेरा p जो है इसी रेंज में है, राइट गाइस? आई कुड सिंपली से माई p lying in this range, एंड p अगर इस रेंज में है, इफ आई सिंपली फाउंड दिस वन ऑल्सो, ये जो मुझे मिला है इसको भी तो रखना पड़ेगा. जैसे मैं यहाँ रख दूं कहीं पे, लेट्स से हियर इज 9. So now my range change. You can simply see my range change. Now I don't have to calculate till the 13. Now I simply have to calculate from -4 to 9, because according to this equation, the only possibilities are -4 to 9. Because p is less than 9, so it is possible that -4 भी आ सकता है. So I just have to calculate these values. ये वाले नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है? सो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? द सिंपल थिंग, इधर यू कैन काउंट ऑन योर हैंड, सिंपली फिंगर पे कर लो. द सेकंड थिंग आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर ये ए है और ये बी है, और आपको इसके बीच का, इंक्लूडिंग दिस टू, इंक्लूडिंग ए एंड बी, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर, टोटल नंबर इन बिटवीन देम. व्हाट यू कैन डू? यू कैन सिंपली डू व्हाट? बी माइनस ए प्लस 1. This is what you can do to calculate all the values including a and b. So if I have to calculate these value, I can simply what do? I will do 9 minus -4 plus 1. So 9 minus -4 is nothing but 9 plus 4 plus 1. So this is nothing but, which is equal to 14. Hope you got the answer. So option D is the answer. समझा कि नहीं समझा? 13 क्यों आ रहा था अवनीत? I think you didn't calculated or didn't counted 9, right? Equal to नहीं ले आऊंगा, that's why 13 आ रहा. Is it? Got the like निकेश, समझ में आया क्या किया हमने? Gothman, have you understood? And Anandita and other new one. अंशु साइलेंट से आज क्या क्या सीन है? नॉट इवन आंसरिंग. अच्छा, यस बोल दिया, चलो चलो चलो, यस बोली ना, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. चलो, ये अगर समझ में आ गया है तो ये होमवर्क है, कुछ नहीं है. देख लो यहाँ थोड़ा बेसिक मतलब समझा देता हूँ, करना वही है. Here simply they have given to you, this is f of x, this is g of x, and also they have given to you f of x is equal to g of x. They have two distinct real roots. You have to calculate, you have to find the largest positive integer of n. Simple है, दोनों को इक्वेट कर दो. इक्वेट कर दोगे तो you will get x square plus 11x plus n, which is equal to x. If you solve ahead, you will get x square plus 11x plus n minus x is equal to 0, and at the end you will land with this equation, x square plus 10x plus n is equal to 0. बाकी का दिमाग लगा लेना, इतना मैंने बता दिया. इज माई माइक ऑफ? माइक ऑफ है क्या?
निकेश क्या हुआ? माइक ऑन, डू यू वांट टू स्पीक? You can like ask the question at the end of the session, Nikesh. No worries, I will take all the doubts. If you have any doubts related to this one, do let me know. इसके अलावा कुछ है, we'll take the doubts when we'll start Q&A. Okay, just wait for a few more minutes. Like we are almost done with today's session. आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहा हूँ. These are some important things जो हम करते हैं. Let's see this one. Now in this question, they have given you in copying the quadratic equation. ठीक है. और कितने क्वेश्चन है इसके? Give me a moment. Okay, so we have three questions. Okay, चलो ये सॉल्व कर लेते हैं. Because today we have Anshu and Avneet both of them in the session. So let's solve this one. दोनों का नाम लिखा है मैंने. Okay, guys. So let's solve this one. What the question is saying, in copying the quadratic equation, this is the quadratic equation something, and Anshu made an error in noting down the coefficient of x, and she got, she or he, यार ये confusion है. That is a confusion. He she जो भी हो बता देना. नाम क्यों कंफ्यूज कर देते कभी. सो जो भी है, got these as a roots, while Avneet made an error in noting down the constant term and got -4 and -6 as the roots. What are the roots of the actual equation? Actual equation के roots क्या है? So first you have to find the actual equation, then you have to find like what is the roots of the equation. ठीक है, तो have a try. उसके पहले आंसर कर दो he है या she है, so that I will write here. he होगा most probably. चलो, she, okay. We'll change when share with you this PDF. We'll change this to she. Okay. अभी के लिए ऐसे में लिख दे रहा हूँ. Cool. Okay. Try this question, guys. So I'm going to teach you two approach to solve this question. One is simple layman approach. Second one is also a simple layman approach. तो कोई मेंटोस वाला नहीं है यहाँ पे. ठीक है. Both are the layman approach. layman not layman. थोड़ा मेरा इंग्लिश खराब है. Okay. 2 and 2. Let's see, government, you are getting 2 and 2, Avnit getting 2 minus 12. Let's see what is the actual answer. And others are still solving. So now see here, the equation is like something x square plus px plus q, right? And Anshu made an error in noting down the coefficient of x. Noting down the coefficient of x, she made a error. And she made an error and she got 6 and -4 as a roots. So if I am not wrong, coefficient of x होता क्या है? Let's say before going to deep dive into question, I told you earlier that alpha plus beta is nothing but, this is the sum of the roots, right? Alpha and beta are the roots, and sum of the roots was what? It is minus b by a, right? Similarly, the product of the roots alpha into beta is nothing but c by a. And I mentioned you the equation earlier, if you remember, and in the starting of the session I mentioned the equation. This is like x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. If you remember these three, well and good, you can easily solve this one. Now see here, when they are asking me a coefficient of x square, like a coefficient of x is what? If I simply say coefficient of x is nothing but p, and p is equal to b is equal to p, right guys? अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन ले दूँ ax square plus bx plus c is equal to 0. Now simply here if you see the coefficient of x is what? b. So
Anshu made an error in coefficient of x so that she got the answer incorrect. तो ये incorrect हुआ होगा ना उसका, अगर वो coefficient of x में error की, if she made an error in the b, so she got the incorrect answer here, but she got, like we can assume that she got correct one is here. ये तो correct हुआ होगा ना उसका, coefficient तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है, there is no need of coefficient here. तो अगर coefficient of x की अगर कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, so it means I would simply say yes, because she made jotting down, noting down the points of coefficient of x, it means she jot this part correct and this part correct, right? p उसने गलत नोट किया, बट बाकी दो तो करेक्ट किया होगा नोट। समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा? अगर ये आ रहा है समझ में, तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज करेक्ट. So she got alpha into beta. The value for this is correct for Anshu. It means what? Alpha की value क्या है? 6. What is the value for beta? Is -4. And 6 and -4 is nothing but -24. So alpha plus beta is nothing but what? As I told you, it is nothing but C upon A. So here you can see C क्या है? Q. तो Q की value क्या मिल गया आपको? The value for Q is -24. Hope you got the point. समझा Q कैसे निकला? Similarly, in similar manner, while Avneet made an error in noting down the constant term, now she made error in this part. Okay, let's change the color of pen. Yellow कर लेते हैं. She made error here. Q नोट करने में उसने error कर दिया, but ये दोनों तो सही किया होगा नोट उसने. She must be noted this part correct. Just she made error in a constant term. It means this answer should be a wrong, and she got this one is correct. If she got this one correct, I could simply say the value for alpha plus beta is correct. Avni's value. Okay, so alpha क्या है उसका? -4 plus -6. If you add this, you will get a -10. So the value for alpha plus beta is -10, which is correct for Avni. And Avneet का अगर ये value correct है, तो also you can simply say that alpha plus beta is nothing but minus b by a. So alpha plus beta is nothing but minus b by a. So what is the b? You can simply say b is here a p. So minus p is equal to -10. So minus minus cancelled. So value for p is what? P की value क्या आ गई? 10. So you got your equation from here. Simply you can see the equation is x square plus p की value कितनी है? 10 x plus q की value क्या है? माइनस. So plus minus minus 24 is equal to 0. This is the equation. Apart from this, if you don't see q p ये अगर आप नहीं देख रहे हो, if you simply judge by this equation, you can easily find this also. See, simply here alpha plus beta, the value for this is what? -10, right? Okay, आपको equation देखना पड़ेगा. You can't do it directly. You have to see the equation because here it is a value of plus px. So देखना पड़ेगा. And it is a minus px. Also अगर नहीं भी देखे तभी भी चलेगा. Let's see here. See this. This is a -10, right? The value for this is -10 and the value for this is -24. If you simply put here, you will get x square minus -10 of x plus -24 is equal to 0. From here also you will get this equation is x square plus 10x -24 is equal to 0. That's it. अगर ये निकल गया यहाँ तक, अगर आपको समझ में आ रहा है, then well and good. Let's go ahead. समझा यहाँ तक कि क्या किया मैंने कि नहीं समझा? कुछ तो कह दो गाइस. बोल दो ना सर, सॉरी टाइप कर दो ना जरा. अच्छा, you got the point. Anandita, have you understood what I explained so far? Yeah, great, great. सबको समझ में आ रहा है तो चलो. अब ये जैसे हमें मिल चुका, once we got the equation, now our work is done. Now simply use my approach. Okay, the x square plus 10x minus 24 is equal to 0. Now use my approach, what I taught you
in last session. In last session, I taught you simply when you got this kind of equation, the step one is what? The step one is multiply this value like a coefficient of x square and this value. So coefficient of x square is 1 minus 24. So you will get minus 24. Now second step is break down minus 20, like a break down the value which you got by multiplying a and c in such a way so that you will get the value 10. So इसे break करना है. How should I break? I simply do 12 twos are 12 twos are 20 minus 24, and because it is minus 24 I have to give minus sign to someone of one of them, like इधर इसको दूंगा या फिर मैं इसके दूंगा. So any one of them I have to give a minus sign, but because you can see here I need a plus 10. What I need here? I need plus 10. Because I need plus 10 here, I simply give plus sign to a greater number or bigger number and minus sign to the smaller number. Now you can see when I multiply these two, I will get a minus 24. When I add these two, I will get a plus 10 as the answer. Hope you got this point. Now third step is what? Third step, simply divide this value by coefficient of x square. Because the coefficient of x square is 1, I could simply get a plus 12 here and minus 2 here. And the last step is what? Change the sign. Last step is what? Change the sign. So when you change the sign, you will get a minus 2, 12, and 2 as a answer. So answer for this equation question is minus 12 and 2. Hope you got the answer point. अब जो सोच रही है क्या कर दिया ये हवा हवा, I would recommend you to watch the first session of quadratic equation. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया उस पर, और देख लो जाके. ठीक है. और नहीं देखोगे तो क्या कहते हो, ये पहले मीम आती थी ना, एक सर रहते थे, नहीं वो तो लाइक वाला था, जल्दी से लाइक दो, शेयर करो तब मैं आगे बढ़ूंगा. कौन से सर हैं? अच्छे सर हैं, मतलब पढ़ाते थोड़ा बहुत ठीक है, मीम ज्यादा होता है उसमें. सो या, if you got this one, let's go ahead. There are some same questions for your homework perspective. You can solve it and practice it. I will add some more question in this sheet and then share with you. You can simply join our group. वहाँ पे सब मिल जाएगा. This was also a similar question. Try करना, नहीं हुआ तो next session में हम देखेंगे. Let's see this one. The very good question, and it is a CAT question. CAT 2019, I guess. CAT 2019 का question है. Have a try. Try करो इसे. I will give you 2 minutes. हो जाना चाहिए. You can use calci if you want. कर सकते हो calci use. मतलब मैं तो करता हूँ, तो आप कर सकते हो. I won't recommend you, but you can. So, like most of you are getting answer 549 and 3721. This is a CAT question, and I won't say it is a tough one. Easy है. ये बना लिया मतलब चंगा सी, आगे भी बना लोगे आप बहुत. So, what is the question saying to you? It is a quadratic equation x square plus bx plus c which is equal to 0. Has two roots. The equation has two roots, 4a and 3a. Okay. Equation has two roots, that is 4a and 3a. If you see here, they asked you what is the possible value for b square plus c. So b square plus c का possible value क्या है? Let's deep down. What is a b square plus c? ये कैसे निकालोगे? If you see here simply, it is a b. Okay. अब यहाँ पे क्या करना है? अब वापस से sum of the roots याद कर लो बच्चों. अगर याद नहीं आ रहा तो याद कर लो. Alpha plus beta, which is the sum of the roots, it is nothing but minus b by a. And because here the value of a is 1, I would simply write it as minus b. Similarly, alpha into beta is what? C by a. And because the value of 1, like a is 1, so I would simply write c. ठीक है. अब यहाँ तक अगर आपको आ गया, आप लोग यहाँ तक निकाल लिए. सम ऑफ द रूट्स व्हाट? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा क्या है यहाँ पे? अल्फा इज नथिंग बट 4a. You can simply see here alpha is nothing but 4a and beta is what? 3a. So alpha की वैल्यू क्या आ गई? 4a plus 3a, which is nothing but 7a. तो माइनस b का जो वैल्यू है वो है 7a. So from here you will get value for b is minus 7a.
value for B is -7 है. Simply see here, alpha into beta is C, and if alpha into beta is C, I would simply say the value for alpha is 4 and beta is 3 it is equal to C. तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई, 3 4 12, a स्क्वायर इज इक्वल टू C. तो मुझे यहाँ से C की वैल्यू मिल गई, मुझे यहाँ से B की वैल्यू मिल गई. क्वेश्चन क्या था? पॉसिबल वैल्यू फॉर बी स्क्वायर प्लस सी. सो बी स्क्वायर प्लस सी का पॉसिबल वैल्यू चाहिए. व्हाट इज द बी स्क्वायर? -7a इसका होल स्क्वायर प्लस सी. व्हाट इज सी? सी इज नथिंग बट 12a स्क्वायर. इसे अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आई विल गेट 49a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर. सॉल्विंग फर्दर आई विल गेट समथिंग अराउंड 61a स्क्वायर, राइट? तो अब 61a स्क्वायर है. अब इसे सॉल्व कैसे करना? अब मैंने क्यों बोला था कैलकुलेटर में यूज करूंगा? देखो सिंपल सी बात है, 61 का टेबल तो मुझे याद नहीं, तो अब तो कैलकुलेटर यूज करना ही है. आई विल सिंपली ट्राई एंड आई विल डिवाइड दीज लाइक वैल्यूज बाय 61. अगर मैं इसे 61 से डिवाइड डिवाइड करूँ, इज इट पॉसिबल? 61 टू जा ही इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कैलकुलेशन. 61 टू जा इज व्हाट? 122. ठीक है, तो ये तो 122 के पास है, मतलब ये तो पॉइंट में आएगा. सो दिस इज नॉट माई आंसर. सिंपली हियर ऑल्सो इफ आई डिवाइड इट बाय 61, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज 547. अब यहाँ मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा. नाउ आई एम यूजिंग सम माय हैंड इंस्टेड ऑफ माय माइंड. सो 4 to 7 को अगर मैं डिवाइड करूँ बाय 61, आई विल सिंपली गेट 7. अगर मैं इसको 61 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 7. बट इज इट ए स्क्वायर? क्या 7 किसी का स्क्वायर है, मतलब वैल्यू है? हमने जितना पढ़ा है so far, the value for 1 square is 1, 2 square is 2, sorry 2 square is 4, 3 square is 9, there is no 7. तो ये तो आंसर होना ही नहीं चाहिए because I need a square, a square. तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. then second one is 361. 361 को अगर मैं डिवाइड करूँ 61 से, here I will get something a value in point. पॉइंट में कुछ आ रहा है तो ये तो अवॉइड करो, इसे खत्म है ये. now I left with these two values. Let's come with a b. B is what? 549. If you divide it by 61, if you divide 549 by 61, you will get 9 as an answer. And you know 9 is the square of 3. 3 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो 9 आएगा. तो yes, this is a possible value. Hold down, don't mark the answer. रुक जाओ. कभी कभी क्या होता है, कैट से भी गलती हो जाती है और दो वैल्यूज आ जाते हैं. सो होल्ड इट. लेट्स सी द फर्स्ट वन. ए भी देख लेते हैं. 3721. If I divide this by 61, okay, 372, okay, 21 divide by 61, I will get something 61. Okay, तो ये 61 का स्क्वायर है. सो इज इट अ 61 स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू? 61 किसी का स्क्वायर है? नहीं. एज फार एज आई नो 8 स्क्वायर इज 64 एंड 7 स्क्वायर इज 49. सो इनके बीच में तो 61 आता है कहीं पे, बट 61 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू. तो सिंपली दिस शुड बी नॉट माई आंसर. ऑप्शन बी इज माई आंसर. होप इट इज क्लियर. बताओ समझा नहीं समझा? तो 549 मैक्सिमम लोगों का आ चुका है आंसर. जो 37321 कह रहे थे, 61 is not answer because it is not a square of any, like it is not a value of any square. If you got this, well and good. ये होमवर्क है, ट्राई करना. सिंपल है. लाइक आई थिंक ऐसा हमने क्वेश्चन कर चुके ऑलरेडी. And this is also a similar question. We already did this kind of question in last session. So these are the homework for you. And right now we are done with the session. ये हो गया. भागना नहीं कोई भी, CR सेशन है, उसके बाद वेट करो. ओके. And yeah, we will take some Q&A, some one or two doubts. If you have any doubts, then we will wrap up the session. Apart from this, yeah, this is something you can look for. If you want a personalized mentor, you can check these courses. These are some courses. Apart from this, 69 series master classes and booklet. These are the important thing. देख लेना, चाहिए हो तो enroll कर लेना. Also, एक और चीज जो था, मैं फिर से रिमाइंडर दिलवा दूं आपको. In 29th, like June, आफ्टर 8 PM यू कैन टेक अ मॉक. संडे है, संडे को हम क्लासेस नहीं लेते, संडे को मॉक देना है. यू मस्ट अटेम्प्ट दिस मॉक एंड आई एम गोइंग टू एनालाइज द LRDI पार्ट.
ट्यूसडे को मैं करूँगा, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे। ठीक है, तो अटेम्प्ट कर लेना बिफोर ट्यूसडे। ओके, एंड अच्छा लगे तो एनरोल भी कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा प्रमोशन। And if you want these sheets, whatever sheets we have done so far, you can simply join our community. Until the time, I wish you all the very best. We'll see you in next session. Jai Siya Ram.